good evening to one and all present here. One important key to success is self-confidence. An important key to self-confidence is preparation. Well, success in an interview is nothing but a matter of preparation. This is Pranav Mak, your host for today's session. Our college, Sri Guru Gobind Singh Ji Institute of Engineering and Technology, is known for its prestige and excellence. Every year, our college students showcase to the world how capable we are. Our college has an official cell to provide placement in various companies, that is, training and placement cell, helping every individual to secure their future. So today we are here to take guidance from a well-known personality and our today's guest of honor, Miss Neelam Abhyankar, about how to prepare thoroughly for an interview. She has done a BA Honors in Philosophy and MBA in HR from Welingkar Institute of Management. She has 23 years of experience with corporates and educational institutes. She has 8 years of core experience as a placement manager. She has also interacted with 1,200 candidates, including freshers and experience. So, in this session, we all are going to enlighten ourselves with skills like communication skills, body language, manners and etiquettes, dress code, English speaking, resume building, Q&A session for an interview. So, thank you, ma'am, for accepting our invitation. We all welcome you on behalf of Training and Placement Cell. And now I request you to please take over this session. Yes, thank you, Pranav. Good evening, guys. I would like to give my sincere condolences those who must have lost their beloved ones in this pandemic, and I would like to thanks Joshi sir, including as he has given me the opportunity to talk to you. I would have come personally, but the matter of distance. So thanks to technology that we are meeting over here. And my sincere thanks to Yash sir as well, because of him we can meet today, and his excellent communication. So I'm really thankful, Yash sir, as well. Okay, now we will start with the session. Just a minute, let me check. You even have done anything. So I would like to talk to you directly. If you have any questions, and please feel free to talk to me. It will be very grateful. You will. Uh, I suggest you that in any language, English, Hindi, Marathi, that's not a matter. Basic question is, am I audible? Hello, am I Yes, audible? ma'am, you are completely audible. Okay, okay, okay. So I just want you to clear your all doubts regarding the placement. That is my first this thing. Then we will talk about. Okay, then are you happy? The physical college has started after 2 years of online classes. Anyways, we can talk, like this one on one. It's okay. Basically, I just give you one guideline. That is, see, अपने को तो ना frankly बोलेंगे ना तो अपने को तो रैंचो तो बनना नहीं है भाई. अपने को तो लैम्बोर्गिनी चाहिए, right? So this is your first step towards your Lamborghini. So listen to me very carefully. I'll be grateful for this. Just a minute. So can you see my PPT? No, ma'am, currently you haven't presented. Yes, Pranav, you said something. I can't hear you. Yes, ma'am, the You presentation can is see my, not yes, you visible. can see my PPT, right? Okay. So you have given already a brief about me, so I'll just go ahead. Now we will talk, before we will talk about resume building, I will give you one example. Yes.
It is not visible. Wait a minute. हे कनिका नाही दिसत आहे. पीपीटी दिसत नाहीये. जस्ट हेल्प ना. Yeah, now you can see, right? Okay. So before we will talk about resume building, I'll give you one example of my self experience. That one girl from college, one company has visited to our college, and the HR person asked that girl that whether she is like, na, does she has any sibling. Then they said, she said, yes, I have a sibling, I have an elder brother. Then then HR person asked her that whether like, now who help your parents or grandparents when they need your help. Then she said, no, my elder brother is doing everything. So she got rejected. So why do you think she's so like she got rejected? Do you have any idea? Anyone can answer on for this? Okay, I tell you why it is like this. Because if at all the person is not at all responsible at his family front, then how she will be responsible for her uh, in the company's profile. So why HR people are so khadus kind of thing? Why you think so? I'll tell you why. Because HR people are like वो ना सांस की तरह होते हैं. सांस means not like breathing. I'm talking about like सासू माँ. सासू माँ अगर आपने शादी करना डिसाइड किया तो सासू माँ को पटाना पड़ता है ना, whether girl or a boy, that you are the right candidate for their son or daughter. Same way HR people are like that. HR people are like, because every company is having their own culture, their own style of working. So whether you are capable to adapt their style or whether you are the right candidate or not, they see all the aspects. And so HR people grill you so much. They ask so many questions about your personal this thing, and so many things they ask because they want you to see ultimately employee retention is very important for HR people. जब भी वो प्लेसमेंट रिक्रुटमेंट ये चलाते हैं ना, that time it is मराठी बोललं तरी सुद्धा चालणार असेल तर I am very happy. Is it okay? Sir, I can't hear you. Sorry, sir. Ma'am, he is basically trying to say that English or Hindi will be Okay, fine, fine. No issues, no issues. So HR people are, why they grill so much? As I said, they have their own culture. They have company culture. They have their own, na criteria when they recruit people. Employee retention is the basic for them, because हर चीज में हर जगह उनको जब भी रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाते हैं, दे आर ना, it is cost to the company and employee turnover is not right.
So HR people are grill you, so they're grilling you so much, they ask so many questions to you. Okay, so this is the basic. Now we will talk about resume. Why resume is very important? Because resume is your first authenticated face before you meet HR guys or of the company people. Your resume reach to them. So resume is very important, very much. It has to be authenticated, and it has to be like written properly or built properly. It is just for your knowledge sake, I'll tell you that it is just for your knowledge that if the person is fresher, then his resume is called biodata. If the person's is 5 years experience or less than 5 years, then his resume is called curriculum vitae, that is CV. And if the person is having more than 5 years to a number of years of experience, then his resume is called resume. But nowadays everybody is using resume as a general word. Okay, now this is only for your information, nothing else. Now we will talk about your we'll go ahead with the resume building. Mostly I tell people or the candidates that do not to use templates, because templates has their own limitations. Normally hardly templates have no colors. They use very bright colors, they have very limited space, na. So you, whatever you want to elaborate or whatever you want to say or whatever you want to highlight, you can't highlight in the template resume. That's why I most of the time I take these sessions, because just to how to build your resume. Okay, now we will go ahead with the resume building. uh, First is your photograph. Why photograph is important? Because people have similar names, might be similar surnames. In Maharashtrian, most of the time Sawant is a very common surname. In South Indian, Nair is a very common surname. That time it happens like that, ना. HR people get confused. अरे इसको select किया था या उसको select किया था. So it is very tough for HR people, because they don't take only 5 to 10 interviews. They take more than 100 interviews in a day. So it is very tough for them to choose, and you might miss your chance of getting selected. So I really wish that you should put your photograph, passport size photograph, right side of the Word document, or the left side, whichever is comfortable for you. Later on we will talk about your name. So now next to your photograph or before your photograph, in the center, write your name. Then next line it will come to your contact details. Contact details, first will come mobile number, and then next in the same similar line put your email ID. Now in contact details, if you are not at all applying out of India, then please don't write 91. That is really not required. Okay, next is your email ID. See to it that you have professional email ID, which is really required. Because see what happened, normally James Bond at the rate so and so, Avengers at the rate so and so. How the person will come to know that it is your email ID? One of my candidate was having Shani at the rate. अरे astrology चल रहा है क्या? What is this? If you want to add your date of birth date or birth year, it's fine, but name has to be there. See to it. Now I'll give you my example. That is my email ID is abhyankar.neelam. So
when I send mail to your principal sir or to Yash sir, I was talking to him. They came to know ना अच्छा मैडम से मेल आया है और I came to know that अच्छा सर से मेल आया है. So authenticated and with your name, mail ID has to be there. So see to it that if you don't have, please make it right now. Okay. That what you have done till date, what you have learned till date, and what is your future plans 5 years down the line. Okay. Now, if I will give you I'll give you two examples. One is general and one is specific. General example: one of my candidate was a fashion designer, and he he came to me and he asked me to build his resume, and I gave he wants his objective very generalized. So he wrote that seeking challenges in the field of fashion designing helped me to grow and utilize. So this is general statement. Now I will give you my example. My objective in my resume, I write my objective is I have done my MBA, having 23 plus years of experience in corporate as well as educational institutes, and I want to groom students to get their dream jobs. That is my objective. And objective is very important because company people when it has ना it's a brief like एक मूवी का ट्रेलर कैसे होता है ना it's like that. So it's your trailer basically. Objective is your trailer. Fine. Then, so you are very important and it has to be only 2 or 3 sentences maximum, not beyond that. Don't write big paras. Nobody is interested to read, na big this thing. So write only 2 or 3 sentences. That is very important. Next, we will talk about your educational qualification. Educational, I will suggest or I will insist that you make table. 4 columns. One is your so one is your degree. Then next will come your university. Then passing year, and then percentage or grades. So, and over in educational this thing educational qualification, recent qualification has to come first. So now you are taking degree, so you can write you don't have marks, right? So you can write pursue. After that 12, after that 10, and if you want to add your last semester percentage or your grade, you can write it there. But write it, be specific and write down the semester number or semester name. Okay. Then if you have any additional qualification, say if it is not related to your degree, that is fine, but you can write it in the same format so that it happens that they come to know that, oh acha, he knows this also or she knows this also. It is an added advantage for you as a candidate. It is added advantage. Okay. Next, we will talk about your work experience. If you have the work experience, it is great. If you have done any internship, that is also great. You can write it there. But that over there also, you are supposed to write the recent experience has to come first. In work experience, write the designation, then put a dash, company name, then put a dash, and in the same line,
from where, which month or which year to which year you have completed the completed your uh, tenure, whatever. And in one or two sentences max, write down over there what you have learned there or what you have achieved there. Okay. Then next is your personal details. Personal details may first it will come your address. So write your complete postal address. Sometimes company people send goodies also. Huh? If you are the employee, after employee, few companies have that habit. New employees they send some goodies. So please write your correct postal address. So you will get that goodies. Okay. So uh, how you order your food or your ना clothing और Zomato पे आप order करते हो ना, so वैसे ही आपको तभी आप आपका postal address देते हो ना. Same way you are supposed to give your total postal address. If you are applying out of Maharashtra, then only write comma and Maharashtra. Otherwise, don't write, please. If you are applying out of India, then only write India. Otherwise, no need of extra information has to be given. Okay. Next, in your personal detail, next will come your date of birth. In date of birth, don't write your how many years you have completed. Please don't do that. Let them calculate. अरे कंपनी वाले को कुछ तो काम करने दो. Okay, so write your date of birth, but write it month, date, month, and year format only. I'll give you my example, that is 12th October and the year, so that it will be comfortable for the company people to get your birth date properly. Because if you write slash or something like that, then it happens month and date में थोड़ा गड़बड़ होता है कभी कभी. If it is less than 12 महीने होते हैं तो 12 महीने से आपका अगर कम नंबर होगा आपका तो they get confused whether ये month है और ये date है. So better write date, month and year. Okay. Then next will come your hobbies. हॉबीज में आपको रिलेवेंट हॉबीज ही लिखने हैं. ओके. हॉबीज में आपको सी रिलेवेंट. आई फ्यू पीपल आर राइटिंग कुकिंग. किसी को चाय बनाने भी ढंग से आती नहीं है, मैगी बना या 2 मिनट में, दैट इज नॉट योर हॉबी. So be specific when you write your hobbies, because HR people 101% they grill you in all whatever you are writing in your resume. In every word they can grill you. So don't write any extra information and don't write any less information. Okay. So in hobbies I will give you another, of course I will give you my example. In hobbies I write, normally I reading Marathi novels and philosophical books. So be specific what you are reading. So if they ask me questions, हाँ अभी आप कौन सा पढ़ रहे हो, I can say कि हाँ अभी वपू काळे जो राइटर है उनका मैं एक बुक पढ़ रही हूँ. You know, I have immediate I can answer. Okay. So it has to be specific about your hobbies whenever you are writing hobbies. Next, over here in hobbies, after that if you have ना state level पे आपने बैडमिंटन खेला है या you have done something, you can, what obvious है, you can write it over here that you have achieved some medals or something like that. In your hobbies you can write it down. Next will come your references. Now why references are important? It is because company people nowadays checking the references. Every company is checking the references. So see to it that you will write at least or minimum 2 references. Rather only 2 references you are supposed to give. Okay. In references you are supposed to write the person's name, his designation and company name and his contact number, correct contact number, and
सी टू इट, अंकल आंटी आजू वाले का बाजू वाले का रेफरेंस नहीं देना है, प्लीज डोंट डू दैट. ओके, so better you will give the person who know you very well. He knows your family background, he knows you personally. डिजिटल सिग्नेचर बना लो. यू गाइज आर वेरी एक्सपर्ट इन कंप्यूटर्स. हमारे जैसा नहीं है, हमको बहुत कुछ आता नहीं है, बट यू आर एक्सपर्टीज इन कंप्यूटर्स. सो डिजिटल एक सिग्नेचर बना लो. अगर हार्ड कॉपी देनी है तो यू कैन साइन इट, दैट्स नॉट अ बिग डील. बट सिग्नेचर shows that this is the authenticated information has given by you. So signature is very important. And the last thing, after your signature, in the bracket write your name. So this is your resume building. This is the correct way and corporate style resume. Now I will give you don't what you are not supposed to do in resume. First of all, Arial is the font, that is the corporate font for every document they use. Arial, not Arial Black, Arial. And your font size has to be 12, 12 साइज होना चाहिए, not more than that. हाँ, अगर आपको नाम थोड़ा बड़ा करना है दैट यू कैन डू, बट वो नेक्स्ट लाइन में नहीं आना चाहिए. किसी किसी का सरनेम, अभी मेरा सरनेम इतना लंबा है कि इफ आई विल राइट माय नेम इन द बोल्ड फॉन्ट तो वो नीचे आएगा, इट डजंट लुक गुड. सो वो वन लाइन में ही आना चाहिए. ओके, सो एरियल 12 इज योर font size, font and font size. Now I'll tell you, word document में right click करके don't use any heavy synonyms. Please don't do that. English is just a communication language. That's it. उसको ना बारी भरकम रिज्यूमे बनाने के चक्कर में वो बड़ा बड़ा वर्ड्स यूज मत करो. सिंपल एंड सिंपल लैंग्वेज इज बेस्ट. At least you can explain what you want to say if they will ask you any questions. So please see to it that you will not use any big synonyms or big these things words. Simple language में, simple words में आप अपना resume write करो. ठीक है? One more thing is, every resume में everything has to be after objective, means from objective, everything has to be left aligned, including your sign, including your name under the sign. साइन के नीचे का जो नाम है, everything has to be left aligned. Okay. एंड सो अभी राइट साइड में सिग्नेचर वगैरह करने का स्टाइल बहुत पुराना हो गया. नाउ नोबडी इज डूइंग दैट, सो डोंट डू दैट. एवरीथिंग हैज टू बी ऑन द लेफ्ट साइड. सो resume building we have completed. Any questions, please ask, and please clear all your doubts here and here, so that it will be very comfortable for you to get a good job. I really wish that you should get a good job. That's why I'm taking you so much. I'm taking means yes sir is taking so much of efforts. So please ask me any questions if you have any doubts for resume building. Do
you have resume, normally, if you are a fresher, only one page maximum, it is one page. if you have experience, आप बीच का जो स्पेसिंग है ना वो आप थोड़ा कम कर सकते हो. आफ्टर ऑब्जेक्टिव आप अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिख रहे हो ना, फॉन्ट साइज कम नहीं होगा, लेकिन वो जो बीच का जो गैप है ना, दैट यू कैन रिड्यूस एंड सी टू इट दैट इट विल बी ऑन. इफ यू आर अ फ्रेशर, इट हैज टू बी वन पेज. इफ यू रियली हैव अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, देन second page, but mostly one page. For freshers it is only one. Okay. One had asked me projects and internship. I told you na, it is, you are supposed to write it in work experience column itself, because internship is your work experience, right? You have worked over there na, so you can write it there. If it is internship, then you can write in bracket it's an internship. After your completion of your month and year, you can write it over there. Okay. Any other question regarding this? Asked any n number of questions. I am really welcome for this. Yes, of course, Ali, you can write it down, sure, but don't write freelance. Now, freelance is nobody using that word. Everybody is using individual. Okay, so write individual work as such. Don't write freelance. Resume में color page नहीं होना चाहिए. Absolutely no colors, not a single. Highlight नहीं करना है. What to tell you? आप highlight objective और आपका work experience, educational जो words है ना, that you can highlight. Not highlight. I'm sorry. That you can make it bold. Your name you can make it bold. You can make your contact details. You can make it bold. बट डोंट यू नो ना पूरा बोल्ड मत करना, ठीक है? yes you can add your project names in work experience, sure, but write there that you have done this is a project, not your work experience. But you can write it in your work experience column because it's out of your, so it is an added advantage, but obviously. Any other question anyone has? If I miss out something, you can write it again, please. Sure, we can go ahead. Okay, now we will go ahead and we will talk about dress code. Why dress code is so important? Because ड्रेस कोड, हम लोग जीन्स एंड पैंट्स पहन के हम लोग शादी भी नहीं जाते हैं, राइट? हम लोग पिकनिक जा रहे हैं तो हम लोग ब्लेजर पहन के या यू नो ना शेरवानी पहन के, हम लोग साड़ी वाड़ी पहन के हम लोग नहीं जाते. सो ड्रेस कोड इज वेरी इंपॉर्टेंट. you guys must have seen that मान्यवर का एड किसी ने देखा होगा अमिताभ बच्चन का. So many people will come to know that. I'll give you a short brief about that ad. That you know ना, वो मान्यवर का ad में ऐसा है कि अमिताभ बच्चन बैठा है and बारात आती है and बारातियों को में सब लोग ब्लेजर पहन के आते हैं. Then they say कि you know ना, yes Mr. Khan, yes. Yes, woman. You have raised Finally your happened. hand. Okay. So मान्यवर का एड में ऐसा है कि दे यू नो ना, दे वो सामने वाले सब ब्लेजर पहन के आते हैं, तो अमिताभ बच्चन से कि अरे तैयार होके आइए. सो ब्लेजर एंड ऑल दिस स्टफ आर नॉर्मली यू यूजिंग इन कॉर्पोरेट स्टाइल, कॉर्पोरेट मीटिंग्स पे पहनते हैं, नॉट इन शादी. That's what he wants to say. That is just a you know na punch line of that Manyavar ad.
So dress code is very important. HR people look at you from top to your hair till your नाखून तक, जूतों तक आपको ऑब्जर्व करते हैं. And I have seen many HR people, they make fun of you when you, after your interview you just quit ना. अगर आपने ढंग से ड्रेस नहीं पहना है या आपने ढंग से प्रॉपरली आपको प्रेजेंट नहीं किया है, they just make fun of you, and I really don't want that you guys will suffer with this. So please listen to me carefully for the next this thing. Okay. Now we will talk about girls' dress code because they have good options. Okay. So just a minute. Girls have, they have two options. One is normally pant and shirt. Okay. And they have Indian formals. We Indians are great enough, that in formals also we have taken our liberty, that we have Indian formals is another dress code for corporate nowadays, because in हमारे ज़माने में पैंट शर्ट था नहीं भाई, तो हम लोग इंडियन फॉर्मल्स ही पहनते थे. नॉर्मली चुनीदार आजकल कोई पहनता नहीं है, बट लेगिंग्स एंड लॉन्ग कुर्ती इज इंडियन फॉर्मल फॉर कॉर्पोरेट. So if you are comfortable with Indian formal, go ahead. Nobody will ask you anything. If you are comfortable with pants and shirts or formal this thing, go for an interview. You are supposed to be very comfortable. Okay. Girls have hair. गर्ल्स आपको, अगर आपके बाल लंबे हैं, टाइट पोनीटेल बांधना है या चोटी डालते हो या कुछ भी है, बट यू शुड टाई योर हेयर प्रॉपरली. बाल के साथ खेलते बैठना नहीं है. दैट शोज यू आर नॉट कॉन्फिडेंट. सो सी टू इट. इफ यू हैव शॉर्ट हेयर लाइक मी, वो तो सवाल ही नहीं आता. फिर प्रॉपरली कोम करो, चले जाओ, टेंशन ही नहीं है फिर. ठीक है. Here I will tell you, hair color is absolutely not allowed. You are not supposed to color your hair. Corporate job में नहीं चलता. Whenever after you get a job also, if you will do it, it is not. Strip नहीं चलता, पूरा color नहीं चलता, पूरा natural hair color has to be there. So if you have colored your hair, please make them black. Next, your makeup. Makeup is, if you are comfortable with liner, lipstick, or on Indian formals, if you are putting bindi, that is also fine. So if you want to put a bindi or something like that on Indian formals, go ahead with it. छोटा सा बिंदी लगा दो, that is, it's okay, fine, that's not a big deal. Okay. So makeup, आप light lipstick लगा लो, nail paint भी लगा लो, but it should not be gaudy. Gaudy colors, don't use red color, black color, ना green, blue. ये nail paint के color नहीं, light pink है, या कोई light color use करो, lipstick हो या कोई भी makeup आप करते हो. If you are putting liner, it's okay, fine, absolutely fine. Thin liner, wing eyeliner वगैरह नहीं लगाना है. You are not going for marriage or anything, right? Okay. So now we will talk about your shoes. Shoes, if you are wearing formal, means western formals, then if you are wearing shoes, it's great. If you are wearing Indian formals, if you are wearing chappal, absolutely fine. But see to it that उसका आवाज नहीं आना चाहिए. Whether it is your if you are wearing chappal or shoes, it should not go tak 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 tak. जब भी आप पहनते हो आवाज आता है ना, that is most irritating thing. So don't do that. Simple chappal, simple shoes कोई भी पहन लो, आवाज बिना आवाज की. That is much and good. It is really good. Okay. Next is your ornaments.
Girls, if you are wearing in sorry, Indian formals, then don't wear big danglers, बड़े बड़े झुमके. Don't wear, wear, small tops. छोटा सा tops पहन लो, that is enough, just to show that you are wearing something in your ears. That's it. गले में भी सिंपल चेन अगर आप पहनते हो नॉर्मल वेयर इट, अदरवाइज इट्स ओके, नो नीड. हाथ में भी अगर इंडियन फॉर्मल है, बड़े बड़े बैंगल्स नहीं पहनने, एक सिंपल सा एक हाथ सिंगल बैंगल, सिंगल कड़ा, एक हाथ में तो हम घड़ी नॉर्मली लगाते हैं, सो नो इश्यू फॉर दैट. अगर आप रिंग पहनते हो तो डोंट वेयर 3-4 रिंग्स मत पहनो, एक सिंगल एक हाथ रिंग आप जो नॉर्मली पहनते हो, वेयर दैट रिंग. ठीक है. सो सी टू इट दैट यू विल नॉट मेक योरसेल्फ वेरी गॉडी, very, na, be presentable. That is very important. Okay. Next is boys dress code. Any questions, girl? Girls, any questions? Okay. One of my seminar, one girl asked me about bags. No need to carry any bag. College bag भी चल जाएगा. वो important नहीं है. If it is in your campus itself, company is coming, then आप bag तो अपना बाहर ही रख के जाओगे ना. No need to carry your bag inside, right? So bags are not that much this thing. You can carry your any bag whichever daily you आप जो use करते हो वो bag चलेगा. But dress code के बारे में आपको बहुत ही yeah, you can wear smartwatch. Yes, you can. Sure. Then any other question, girls? Okay. Then we will talk about boys' dress code. Boys' dress code. Boys, unfortunately, boys बेचारे उन लोग को खाली पैंट एंड शर्ट ही है. Girls, I forgot to tell you, if you are wearing in western formals, then don't wear printed shirts. Plain shirts only is the formal, not a printed shirt. Okay. Printed tops come shirt जो आते हैं ना, that don't wear that. Only your proper shirt. Girls के आजकल shirts वगैरह आते हैं ना, that shirt जिसके जेब नहीं होता ना, that shirts only you are supposed to wear. Fine. Then next is your I'll talk about boys dress code. Boys dress code is, they have only one pant and shirt. Normally you're supposed to wear dark pant, light shirt, but guys please see to it, boys especially, color combination has to be good यार. आप बहुत horrible colors पहनते हो, so don't do that. ठीक है. So see to it that black pant and any light color shirt, white है, pink है, any color will do, not a big deal. Okay. Next is your hair. As I said, girls, hair are also like no horrible haircuts, no colors on hair, no your ना this क्या बोलते हैं, हॉरिबल शेप ऑफ योर हेयर स्टाइल, नहीं, वो नहीं जमेगा. प्लीज प्रॉपर हेयर कट होना जरूरी है. प्रॉपरली यू विल हैव टू प्रेजेंट योरसेल्फ. ओके. देन नेक्स्ट इज योर शेविंग. माय गुडनेस, मेरे घर पे भी सेम प्रॉब्लम है. माय हस्बैंड इज हरासिंग मी फॉर दिस. सो शेविंग आपको एवरी टाइम करना ही है. अरे यस सर ने कल तो कंपनी बुलाई थी, कल ही तो शेविंग किया था, अभी आज क्या नया शेविंग? नहीं, बिकॉज आफ्टर ये जो रिक्रूटमेंट ड्राइव चलता है वो बहुत लंबा चलता है. नेक्स्ट डे ऑल्सो वो शाम तक, अगर आपका जब भी पर्सनल इंटरव्यू और इंडिविजुअल इंटरव्यू आएगा तब तक वो ऐसा ग्रीन दिखेगा, या ना, इफ यू डोंट हैव मच दिस थिंग, then it will look very shabby and very horrible. So whenever you are appearing for the recruitment drive, every day you will have to shave your beard. Mustache रखते हो, well and good, it's really, if you are comfortable with it,
trim it properly, but see to it that clean shave for beard has to be there. Now I will give you one example here, that one of my candidate, means I can say my student, he was having problem. He used to keep, ना वो stable क्या बोलते हो आप, trim beard रखते हो ना, he used to keep that every time. And almost 5 companies, three 4 to 5 companies has rejected him. He was excellent student, no doubt. He has given very nice answers and everything, but still he got rejected. Then he came to me and he was asking me, "Okay, why, ma'am, I'm not getting a job?" Then I said, "Why you keep beard?" He said, "कि नहीं मैम, एक्चुअली प्रॉब्लम ऐसा है ना, मेरा फेस बहुत छोटा है." उसका हाइट भी नहीं था, थिन भी लड़का था, वो काफी एकदम दुबला पतला था. देन ही सेड कि मेरा प्रॉब्लम ऐसा है कि मैं अगर बियर्ड नहीं रखूंगा ना तो मैं मेरे एज का नहीं लगता. So that is a big problem for him. So I said then convey this to HR guys ना यार, आप कन्वे कर दो. तो बोलता है कि कैसे कन्वे करूँ मैं ये, वो तो थोड़ी पूछेंगे मेरे को. मतलब whenever you will leave the interview room ना, that time you just tell them कि मैं बहुत छोटा दिखता हूँ, that's why I have kept the beard, that's it. ठीक है. सो इफ यू आर कीपिंग बियर्ड स्पेसिफिक रीजन के लिए अगर आप रखते हो, then you will have to convey this to HR people. So he got a job and 10 lakh का पैकेज मिल गया उसको. So I'm very happy for him. Okay, so shaving is very important, guys. See to it. Boys are very lazy for shaving, so don't do that. At least to get a job, यार shaving कर लो. ठीक है. Then boys shoes. I'll tell you, boys को अभी रेनी सीजन चालू है. आप अगर सैंडल वगैरह कुछ पहनते हो, दैट इज नॉट योर फॉर्मल ड्रेस. सो कैरी वन पॉलिश शूज, दैट हैज टू बी देयर. ठीक है. सो दैट यू नो ना, जब भी इंटरव्यू है तभी वो कैरी कर लो. हाँ, वन मोर थिंग, इफ यू हैव स्वेटिंग का आपको बहुत आदत है या स्वेटिंग आता है नॉर्मली, देन कैरी वन नाइस आयरन शर्ट ऑल्सो. ठीक है. दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट आप पूरा दिन टी शर्ट पे घूम लो, नो इश्यूज, बट वेन एवर द इंटरव्यू ड्राइव इज देयर, वेयर कीप वन शर्ट बैकअप के लिए आप रख दो. ठीक है. नाउ एक्सेसरीज में बॉयज में तो मोस्टली एक्सेसरीज नॉर्मली कोई पहनता नहीं है, काला धागा वगैरह पहन लेते हो, दैट इज गुड, दैट इज फाइन. इट्स नॉट लाइक यू नो ना, यू आर सपोज टू, वो भाईजान वाला, प्लीज वो भाईजान वाला आप है ना, वो ब्रेसलेट मत पहनो, वो भाईजान को ही पहनने दो, अपने को नहीं चाहिए. ठीक है. सो सी टू इट दैट बॉयज नॉर्मली वेयरिंग प्रॉपर, खाली कलर मैचिंग देख लो भाई. दिस इज वेरी वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर बॉयज स्पेशली. वो ब्राउन कलर का, डार्क ब्राउन कलर का पैंट एंड पिस्ता कलर का शर्ट, दिस इज नॉट मैचिंग यार. सी टू इट दैट ब्लैक और ब्लू एक पैंट रख दो, उसके ऊपर कोई भी लाइट कलर शर्ट पहन लो, दैट इज फाइन. ओके. स्लीव्स पूरे ही होने चाहिए, हाफ फोल्डेड स्लीव्स नहीं चाहिए. ठीक है. एनी क्वेश्चंस गाइस? Boys, girls, any questions regarding your dress code? Ma'am, in a shirt, we must have only plain, or any small checkered shirts will be fine. No, plain shirt. At least for interview it has to be plain shirt. एक white color का shirt ले लो, that's it. Black pant तो वैसे भी normally होता है. Don't take any color. Printed shirt तो बिल्कुल भी नहीं. Not even for girls, not even for boys. Basic and very important thing I want to tell you over here. नॉर्मली हम महाराष्ट्रियन पीपल को वो भगवान का टीका वका लगा के जाने की बहुत ज्यादा आदत है. वो गर्ल्स और बॉयज, गर्ल्स भी वो हल्दी कुमकुम या ऐसा, बॉयज भी कुछ वो कुमकुम लगा के, डोंट डू दैट, दैट इज नॉट अ फॉर्मल स्टाइल. सो सी टू इट दैट अपने माँ बाप का, दादा दादी या कोई घर पे बड़ा हो, उनके आशीर्वाद ले लो, बहुत हो गए. वो भगवान का टीका मत लगाओ, इट इज नॉट करेक्ट. ठीक है. इट इज नॉट कॉर्पोरेट स्टाइल.
सो प्लीज आपको अगर ये कंपनी में मुझे जॉब चाहिए ही चाहिए तो प्रिपेयर योर सेल्फ प्रॉपरली। रिज्यूमे 10 बार पढ़ो, रिज्यूमे में एक भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। सी टू एट 10 बार रिज्यूमे आप अपना चेक करके जाओ। बट प्लीज भगवान का टीका मत लगाओ, दैट इज अवर इंडियन स्टाइल एंड प्लीज डोंट डू दैट। ओके, so we will take a 5 minutes break over here, guys, and we will continue immediately within 5 minutes. Yeah, Neha asked you, acha, heels. Heels, if you are comfortable, but आवाज नहीं आना चाहिए heels का. Heels, if you are comfortable, you can wear it, no issues, absolutely. Height में छोटे हो और आप comfortable feel करते हो heels में, 100% you can write it down, no issues. Okay. बट हील्स का ना टक 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 तो म्यूजिक जो चालू रहता है ना, बैकग्राउंड म्यूजिक, वो नहीं चाहिए अपने को। ठीक है, गॉट इट। यश सर को हरास करने से अच्छा है गाइस आप आस्क आस्क मी द क्वेश्चंस। जो भी छोटा सवाल है, मोटा सवाल है, जो भी सवाल है रिगार्डिंग प्लेसमेंट, शूज तो कंपलसरी है हियर। You will have to wear shoes because for it's a formal dress na, so you can't avoid that. Only for interview room में जाने तक और इंटरव्यू रूम से बाहर आने तक आप पहन लो, बट वेयर शूज यार। कॉर्पोरेट में चप्पल या ऐसा ये किटोस वगैरह टाइप का जूता नहीं चलता ना डियर, nobody likes it or not, is that is not a formal style, so you will have to wear shoes. Only for interview you can wear it, just you know na, if you are not comfortable wearing it, but shoes has to be there. Okay, so we will take 5 minutes break and we will immediately we will be back. Okay, one girl Alisha, okay, yeah. No, full sleeves are not mandatory, they can wear half sleeves, but if you are wearing shirt, then they have full sleeves only na, so that is not this thing. इफ यू आर वेयरिंग इंडियन फॉर्मल तो डार्क कलर का कुर्ती है और लाइट कलर का लेगिंग्स चल जाएगा, फुल स्लीव्स इज नॉट मैंडेटरी, नो नो। फॉर बॉयज बिकॉज मोस्टली बॉयज के स्किन पे हेयर बहुत होते हैं ना हाथ पे वगैरह, सो फुल स्लीव इज नॉर्मल ये है। या शूज प्रोफेशनल माने आप जो ब्लैक शूज नॉर्मली पहनते हो ना, वो नाड़ी वाला या ऐसा, या खाली एडजस्टेबल शूज रहता है, दैट शूज यू कैन वेयर। Yes, sir. Yes. So give me 5 minutes break, and immediately we will join within 3 to 4 minutes. Okay. Okay, man, no problem.
Okay, so many people have left the meeting. So shall we start, sir? Or shall we wait for a minute? Sorry, sir, I can't hear you. No, sir. Can you just type it? Ma'am, he's trying to say we can proceed. No, I haven't understood. Okay, we can proceed. Fine, fine, fine. Next is your group discussion. Now, why group discussion is so important? I'll tell you. ग्रुप डिस्कशन इज इम्पोर्टेंट बिकॉज आप मीटिंग में कैसे बिहेव करते हो, आप मीटिंग में कैसे आप टू द पॉइंट बात करते हो या नहीं, यू नो ना, ऑल दीज स्टफ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो ग्रुप डिस्कशन नॉर्मली कंपनी पीपल टेक एंड उनको बहुत जन को बाहर निकालना होता है बिकॉज उनका ऑलरेडी डिसाइडेड होता है कितने जन को लेना है, क्या करना है. सो ग्रुप डिस्कशन इज द की. ठीक है. So what you are supposed to do in group discussion, what you are not supposed to do in group discussion, I'll tell you. कोई भी डिपार्टमेंट में आप जाओ, मीटिंग तो होती है, ठीक है. So in group discussion, keep your eye on the current happenings. अभी रिसेंट जो टॉपिक्स चल रहे हैं, पॉलिटिकल टॉपिक्स हो या कोई भी अभी आर्यन खान का हुआ या यू नो ना एसटी महामंडल का वो जो स्ट्राइक हुआ या मराठा आरक्षण हुआ, नॉर्मली स्पोर्ट्स में अगर कुछ हुआ, पॉलिटिक्स कुछ हुआ, तो कीप आई ऑन करंट टॉपिक्स, हॉट टॉपिक्स जो चल रहे हैं रिसेंट में, मोस्टली उनके ऊपर ही आपको टॉपिक दिया जाता है. ठीक है. देन normally 10 people they take, 10 students, they give you the number 1 2 3 4 5 ऐसा करके. तो whenever your turn will come, that time only you are supposed to speak. किसी को भी आपको कट करके बीच में कन्वर्सेशन चालू नहीं करना है. ठीक है. और बेसिक थिंग इज आपको टू द पॉइंट भी, आपको 10 मिनट्स दिए जाते हैं just to think that whenever they will give you the topic, they will give you 10 minutes to think. So make your point clear, make to the point conversation, maximum 5 lines, minimum 3 lines, not more than that. ठीक है. Next we will talk about what not to do. See, normally company people will give you debatable topics. मराठा आरक्षण, अभी किसी किसी को बोलेगा अरे क्या सबको आरक्षण देना है, ये वो, यू नो ना. सो डोंट डिबेट. आपका पॉइंट अगर वेदर यू आर फॉर और यू आर अगेंस्ट, व्हाटएवर द पॉइंट यू वांट टू से, 3 to 5 लाइंस में व्हाटएवर यू आर थिंकिंग जस्ट पुट फॉरवर्ड, दैट्स इट. डोंट डिबेट. आप अगर कोई बंदा बोल रहा है फॉर में तो, और अगर आप अगेंस्ट में हो, देन डोंट कट हिम एंड डोंट आर्ग्यू विथ हिम. डोंट डू दैट. ओके. अगर एक ही बंदा बोल रहा है, ए लॉन्ग पॉइंट्स अगर आप डिस्कस कर रहे हो, एक ही चीज आप बार बार बोल रहे हो रिपीटेडली, देन इट इज नॉट करेक्ट. ठीक है. टू द पॉइंट. आपको जितना भी आपको बोलना है 3 to 5 सेंटेंसेस में आपका पॉइंट क्लियर कर दो जो भी है. ठीक है. मोस्ट ऑफ द टाइम पूरा अगर आप ज्यादा बात करोगे देन ऑल्सो यू आर आउट. आप बिल्कुल भी कुछ भी, इफ यू विल नॉट से नॉट अ सिंगल वर्ड, स्टिल यू आर आउट. सो सी टू इट दैट 3 to 5 सेंटेंसेस में क्लियर योर पॉइंट,
complete your sentence, complete your viewpoint towards that topic. That's it. अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कुछ भी बोलो, लेकिन एटलीस्ट यू नो ना किसी का भी, या अगर आपको नहीं पता है, फॉर एग्जाम्पल आपने अगर वो बारे में नहीं पढ़ा है, आप रह गए आपका मॉर्निंग में, यू नो ना कि अरे अरे क्या चल रहा है नया वाला, कुछ पता नहीं है, अगर कोई बंदा बात कर रहा है आपको उसमें से कोई ना कोई पॉइंट मिल जाएगा, बट स्पीक समथिंग और द अदर। मिनिमम 3 sentences आप बात कर ही लो, so that you get selected. So GD is like this. Group discussion is kept only for just to see how you behave or how you present yourself when the meeting is going. Because HR people normally take this GD round and they are the bosses, right? So it is boss के साथ आपका behavior कैसा है, आपका body language कैसा है group discussion के time पे, whether you are you know ना scared or whether you are anxious about the topic or whether you are blank about the topic. So they see all these things. So see to it that please एक बार थोड़ा सा यू नो ना ब्रश अप कर लो, या थोड़ा मॉर्निंग में थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ा करो भाई, थोड़ा सा तो होना चाहिए अपने को रिसेंट क्या हो रहा है, नहीं तो वो डेली हंट एंड ऑल दैट स्टफ इज देयर, सो यू कैन आइडिया कि व्हाट टॉपिक्स आर गोइंग ऑन करंट। ठीक है, मोबाइल में तो सब कुछ होता है आजकल, सो इट इज बेटर यू विल हैव द अपडेटेड दिस थिंग। पूरा डिटेल नहीं पता है दैट्स फाइन, बट एटलीस्ट 3 सेंटेंस आपको वो टॉपिक पे बोलने को आना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Any questions regarding GD? Have you suffered something, or you know na, if you are not comfortable with the topic, ऐसा कुछ topic दिया था उन्होंने और you cannot you know na like, so just let me know if you have any questions about GD now. Okay, no questions, so we will go ahead. So see to it that GD round has to be proper. यस डियर, ये आजकल ना वो इंडिया में इतना प्रॉब्लम है ना, इंग्लिश लैंग्वेज इज रियली कंपलसरी, रियली कंपलसरी। इंग्लिश लैंग्वेज अगर आपको नहीं आता है ना तो, बट ऐसे नहीं है एक्चुअली, इफ यू कैन टॉक इन हिंदी 1 or 2 words इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम, बट मोस्टली इंग्लिश विल बी द प्रीफर्ड लैंग्वेज। आई डोंट नो व्हाई इंडिया, अंग्रेज भी इतना अंग्रेजी शायद नहीं बोलते होंगे, बट अपने यहाँ पे ना वो अंग्रेजी आना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई डोंट नो, फॉरगेट अबाउट टैलेंट एंड फॉरगेट अबाउट योर एक्सपीरियंस, बट यू शुड नो इंग्लिश वेरी वेल। सो थोड़ा आप ब्रश अप करके जाओ, आप यू नो अपने आप को थोड़ा सा अपडेट रखो, वो इजीली हो जाएगा, इतना कुछ ये नहीं है। आप 1 आध 2 सेंटेंस हिंदी में भी बोलेंगे दैट्स फाइन। जीडी राउंड इज ओके, लाइक यू नो ना, इट्स अ मीटिंग। आई सेड आप मीटिंग में कैसे बिहेव करोगे अपने बॉस के साथ, वैसे ही होता है नॉर्मली। सो इफ यू विल टॉक इन हिंदी ऑल्सो इट्स ओके। आई टेल यू, आई गिव यू वन इनपुट फ्रॉम माई साइड। आपको अगर जॉब लगने के बाद है ना, आपका बॉस भी आपसे हिंदी में ही बात करता है, दैट इज द वर्स्ट पार्ट इन आवर कंट्री। खाली वो आई डोंट नो इंटरव्यू के टाइम पे इतना बच्चों लोग पे प्रेशर क्यों होता है, दे हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। आई रियली डोंट नो, मींस दिस इज फ्रस्ट्रेटिंग, बट आई डोंट नो मींस व्हाट इज द मेंटालिटी ऑफ एचआर पीपल, आई रियली डोंट नो। बट इंग्लिश में अगर आपका बॉस भी अरे यार तेरे को बोला था नहीं करने को, इवन कलीग्स आर नॉट टॉकिंग इन इंग्लिश, वो खाली ईमेल तक ही इंग्लिश सीमित रहता है बेसिकली। ठीक है, सो अनदर थिंग इज, सो इंग्लिश थोड़ा सा आप अगर ब्रशअप करो या थोड़ा सा आप कन्वर्सेशनल इंग्लिश थोड़ा आप कर लो तो आपको आ जाएगा। और हिंदी भी ग्रुप डिस्कशन में हिंदी इज अलाउड, लिटिल बिट ऑफ, दैट इज नॉट अ बिग डील। 1 or 2 सेंटेंस, अगर 5 सेंटेंस आपको बोलने हैं तो उसमें से 1 आध 2 आपने हिंदी में भी बोल दिया तो भी चल जाता है। ठीक है, over here about English na, I forgot to tell you in resume you are supposed to write languages known. Forgot this point only, totally forgotten. So अगर आप resume लिखते हो ना तो आपको languages known भी लिखना है आपके पर्सनल डिटेल में, आफ्टर योर हॉबीज और बिफोर योर हॉबीज। इन दैट मीन्स डेट ऑफ बर्थ के बाद आप लैंग्वेजेस नोन लिखोगे ना,
तो पता नहीं लॉजिक क्या है, बट एरिया वाइज आपको यू आर सपोज टू राइट लैंग्वेज मीन्स geographical area I'm talking about. So English is a world language, so English will come first, then next will come your Hindi, that is your national language, and then your mother tongue, that is Marathi है, Gujarati है, any Kannada, जो भी आपका mother tongue है, ठीक है. And if you know any other language, then write it down after your mother tongue. So if anybody will ask me about this thing, then I will write English, Hindi, Marathi, that is my mother tongue, Marathi, and in bracket you can write I know Gujarati, I can speak but I can't read or write. So in bracket after Gujarati, in the bracket I will write only I can spoken. That's it. ठीक है. So I forgot this point in resume. Okay. Next, any other question in GD about GD round? खाली डिबेट मत करो, डिबेट की वजह से ना आप आउट हो जाओगे, और बिल्कुल भी ना बोलोगे ना तो भी दे विल यू नो ना दे विल नॉट एक्सेप्ट यू. सो सी टू इट दैट यू विल बी एटलीस्ट 1 or 2 सेंटेंस कुछ तो बोलो टॉपिक के बारे में. और कोई बात कर रहा है जिसको थोड़ा पता है आपके ग्रुप में, यू नो ना 10 जन के इसमें, तो आपको कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, 1 आध 2 पॉइंट्स कि आप उसके ऊपर बात कर पाओगे. ठीक है. I'm not getting Pranav time duration for GD. Yes, ma'am. If you are competing in the GD round, what should be the ideal time for the discussion of that particular topic? Like, I if s- there are I said no, it's not a discussion. You are not supposed to discuss. Group discussion ये खाली नाम है उसका. But you are not supposed to discuss anything. आपका टर्न आएगा तभी आपको 3 to 5 सेंटेंस में आपका पॉइंट बताना है. दैट्स इट. वो डिस्कस कुछ भी नहीं करना है आपको. वो खाली नाम के लिए ग्रुप डिस्कशन है, बट इट इज नथिंग यू आर सपोज टू डिस्कस. यू कैन डिबेट, यू कैन डिस्कस एनीथिंग, बिकॉज पॉइंट्स नहीं है ना, बनते ही नहीं बिल्कुल. आप डिबेट नहीं कर पा रहे हो तो डिस्कस क्या करोगे आप. तो ड्यूरेशन से होता ही नहीं है उसमें. जितना आपको सोचने के लिए टाइम दिया जाता है ना, उसके ऊपर 10 जन का आपका टर्न आएगा. अगर आपका 1 2 3 4 आपका चौथा या पांचवा नंबर है, आपको आपको अपने पॉइंट्स 3 to 5 सेंटेंसेस में कंप्लीट करने हैं. दैट्स इट. फिर 6th कैंडिडेट विल स्पीक. सो डिस्कशन इज जस्ट लाइक यू नो ना, बोला जाता है, दैट इज जस्ट अ डिस्कशन, बट इट्स नॉट अ डिस्कशन बेसिकली. ओके. एनीथिंग एल्स? Okay, now we will talk about interview preparation. Interview preparation क्या होता है? I'll tell you what. Before interview you are supposed to prepare. अगर जैसे आपके बारे में कंपनी को जानने का हक है your resume, वैसे आपको भी कंपनी के बारे में जानने का हक है. And you will have to know when you are appearing for the company. कितना भी घाई हो, आपके पास मोबाइल है, आप कंपनी वेबसाइट पे जाओ, कम से कम उनका अबाउट अस लिटिल बिट, उनका क्लाइंट लिस्ट लिटिल बिट, एंड उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स, इतना तो आप जान लो. ठीक है. घाई घाई में थोड़ा सा चलेगा, because I know guys, students have lot much pressure about you know getting a job, वो सबमिशंस ये वो सब बहुत प्रेशर होता है आप लोगों पे. बट सी टू इट दैट थोड़ा सा कंपनी का बैकग्राउंड आपको पता हो. बिफोर इंटरव्यू आप देख लो तो भी चलेगा, बट कंपनी वेबसाइट लिटिल बिट, अगर आपके पास बहुत टाइम है, आपको पता है नेक्स्ट डे कंपनी आने वाला है, देन बिफोर इन द इवनिंग मींस बिफोर डे यू कैन जस्ट चेक यू नो ना कंपनी वेबसाइट. तो आप कंपनी का पूरा वेबसाइट भी देख सकते हो. बट इफ यू हैव लेस टाइम, देन अबाउट में थोड़ा सा कंपनी कब चालू हुआ, कब उसका क्या बैकग्राउंड है, ये वो थोड़ा सा आपको पता हो तो बेटर है. इट इज जस्ट फॉर योर नॉलेज से. एचआर पीपल विल नॉट आस्क यू एनीथिंग. उनका विजन मिशन क्या है यू नो ना थोड़ा बहुत, तो उसके ऊपर आप थोड़ा सा अगर कुछ पूछे, तो पूछते नहीं है नॉर्मली, बट इफ दे विल आस्क यू देन इट इज बेटर दैट यू शुड नो दैट. ठीक है. अरेंज योर फाइल. अभी इट इज एक्चुअली नॉट रिलेटेड टू you guys, but I have put that point over here because it's a general PPT.
arranging file when you are going to their office, or arranging file when you get a job or you are about to get a job, that time actually you are supposed to arrange your file. I'll give you in one or two sentences. पहले आपका बायोडेटा रख दो, उसके बाद आपका जो भी वर्क एक्सपीरियंस का जो भी आपके पास होगा, सर्टिफिकेट्स या समथिंग लाइक दैट, पुट दैट. देन योर सर्टिफिकेट्स वॉट एवर यू हैव यू, उसका फोटो कॉपीज एक रख लो, ट्रू कॉपीज करके. देन योर अचीवमेंट्स, इफ यू हैव गॉट सम मेडल्स और समथिंग लाइक दैट, तो उसमें भी उसके साथ भी सर्टिफिकेट मिलता है, दैट सर्टिफिकेट्स. And then your pan card, Aadhaar card ka xerox or something like that, but that is not for you actually. Here I'll tell you, if it is in your campus तो वैसे भी आप कॉलेज में रहते ही हो, but if few companies they take GD round and technical round and ये सब, and interview के लिए वो लोग अपने ऑफिस में भी बुलाते हैं. That time you are supposed to reach before time. अगर आपको 10 बजे का टाइम दिया है तो see to it that 9:30 quarter to 10 तक आप पहुंच जाओ. I'll tell you why. It is because you can freshen up, you can organize yourself, you can cool down. ट्रैवल करके जाओगे या समथिंग लाइक दैट, तो थोड़ा सा कूल डाउन हो जाओगे, थोड़ा कंपनी एनवायरनमेंट जो उनका ऑफिस एनवायरनमेंट है उसके ऊपर थोड़ा कस्टम हो जाओगे. 15-20 मिनट्स, हाफ एन आवर अगर आप जल्दी पहुंचते हो तो. So see to it that reach before time. As I am a mother as well, I am an elderly person, so normally I guide students, please don't go in empty stomach. बहुत जन को बहुत एंजाइटी होती है इंटरव्यू के बारे में. they don't eat properly, then it happens that they can't answer properly because पेट में भूख के ना, नहीं इंटरव्यू एक बार हो जाने दो यार, फिर खाऊंगा मैं कुछ भी. don't do that. have at least something so that you can answer properly. see to it that अगर आपको उनके ऑफिस में जाना है या इवन कॉलेज में तो आपका कैंटीन वगैरह होगा, बट उनको ऑफिस में if they call you, then see to it that some biscuit का पैकेट या something keep with you, which is very important because if they will keep, उन लोग का वर्किंग तो चालू रहता है. अगर एचआर वाला इंटरव्यू ले रहा है, बीच में उसको मीटिंग आया तो आपको 2 घंटा बिठा के रखा, उनका लंच टाइम हो गया, दे आर हैविंग देयर लंच, व्हाट यू विल डू दैट टाइम, ना बाहर जाके खा भी नहीं सकते, पता नहीं है बाहर कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा. सो कीप बिस्किट और चॉकलेट और समथिंग लाइक यू कैन हैव सम फ्रूट और समथिंग लाइक दैट, सो दैट आप जब भी इंटरव्यू रूम में जाओ तो आप एटलीस्ट हैव समथिंग इन योर स्टमक, सो दैट आप कंसंट्रेशन रख के आप अच्छे से प्रॉपरली आंसर दे पाओगे. ठीक है, एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? Okay, we will go ahead. Body language. Now what is the body language is, see confidence तो आ जाएगा, but body language is very important. आप अगर ऐसा थोड़ा डर के या थोड़ा फेस पे प्रेशर देके ऐसा मत जाना, बिल्कुल भी. don't do that. Relax your mind, cool down yourself, deep breathe before entering into the interview room, and greet the interviewer. तभी ना वो बैरियर खत्म हो जाता है एज ए इंटरव्यू एंड इंटरव्यू बिटवीन इंटरव्यूई एंड इंटरव्यूअर. ठीक है, ग्रीटिंग वन एज आई से गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, वॉट एवर यू गाइज नो. ये दोपहर के 12 बजे तक आपको गुड मॉर्निंग बोलना है, 12 से 4 आपको गुड आफ्टरनून बोलना है, और 4 के बाद आपको गुड इवनिंग बोलना है, राइट. गुड नाइट बोलेंगे तो सो ही जाना है, तो गुड नाइट तो वैसे भी कोई बोलता नहीं है. सो टिल 9 o'clock भी इंटरव्यू चालू है तो भी आपको गुड इवनिंग ही बोलना है. ठीक है, कैंपस में अगर कंपनी आती है एंड इफ 9 o'clock 10 o'clock तक भी इंटरव्यू चलता है तो गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग सर, जस्ट ग्रीट देम. तो आपका भी थोड़ा बैरियर, वो स्माइल करते हैं आफ्टर यू ग्रीट ना, एंड ये आदत डाल दो ग्रीटिंग का. whenever sir will come to your ना लेक्चर्स के लिए आते हैं सर या इतना, तो गुड मॉर्निंग सर, वो टाइम देखते हैं ना उसके हिसाब से ग्रीट करो, तो सामने वाला है ना थोड़ा सा गुड फील करता है, अच्छा लगता है. इन द गुड इवनिंग गाइस, यू फील गुड ना, कह रहे चलो भाई, कन्वर्सेशन चालू हो जाता है व्हेन यू ग्रीट समवन. ठीक है, सो सी टू इट दैट यू विल ग्रीट देम फर्स्ट.
टाइम देखो घड़ी में और उनको ग्रीट करो प्रॉपरली, सो दैट वो ना HR वाला पहले स्माइल करेगा आपसे, तो आपको थोड़ा आपका थोड़ा आप यू विल फील मोर रिलैक्स कि चलो भाई स्माइल तो किया कम से कम। वो स्माइल करके आपको कंफर्टेबल फील करवाएगा और आप कंफर्टेबल हो भी जाओगे। I will give you HR people have the habit to make you comfortable, हाँ, बट आप है ना एज यू डोंट हैव एक्सपीरियंस तो वो कुछ ज्यादा ही कंफर्टेबल हो जाते हो आप, एंड तभी आप गलत आंसर दे देते हो। सो सी टू इट, आपको प्रोफेशनल ही रहना है। HR people are very smart, really very smart, that they make you comfortable। अरे पानी पी लो बेटा, you don't take tension, ये वो, और ऐसा कोई गूगली डाल के क्वेश्चन पूछेंगे और आप गलत आंसर दे दोगे। So strict to be professional. Thank you ma'am, thank you sir, you know ना, be professional thoroughly, ठीक है। Then how to sit on the chair, this is also a very important thing। आप पूरा lean, अभी I will explain because I can't show you over here, so I will explain to you that you know ना, when you sit in the chair, sit halfway, हाफ चेयर पे बैठना है आपको, पूरा रिलैक्स होके। आप टीवी देखने के लिए घर पे बैठे हो ना सोफे पे या ऐसा, लीन होके बैक साइड, डोंट सिट लाइक दिस। हैंडल पे हाथ रख के आप कंफर्टेबल हो तो आप वैसे बैठो, अदरवाइज अपना लैप पे हाथ रखे आप कंफर्टेबल बैठो। रिवॉल्विंग चेयर रहता है, कंटिन्यूअस चेयर आपकी हिलनी नहीं चाहिए, दैट शोज यू आर नॉट कंफर्टेबल। तो आपका वो जो चेयर पे, रिवॉल्विंग चेयर पे वो लोखंड का जो पैर रहता है ना उसके ऊपर, वो उस पे आप पैर जमा लो और सिट स्ट्रेट, और ऐसे आधे चेयर पे बैठो, जाके अगर इंटरव्यू हो गया तो फट से उठ के आप निकल सकते हो, ठीक है। देन नाउ वी विल टॉक अबाउट पैनल इंटरव्यू। पैनल इंटरव्यू में आपको क्वेश्चन बम्बार्ड करते हैं वो लोग, just to you know na, so that you will lose your confidence, so don't feel scared। one by one जैसे ही क्वेश्चन आता है, जैसे ही क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, जैसा एक एक करके क्वेश्चन का आंसर दे दो, ठीक है। जिसने क्वेश्चन पूछा है उसकी आंख में आंख डाल के कॉन्फिडेंटली आंसर दे दो, नॉट वरी। अगर आपको नहीं पता है, अगर आपको नहीं जम रहा है, आपको नहीं आता है, डोंट लाई, बिकॉज HR आर वेरी, if you lie something they will agree on that more, please don't lie। झूठ मत बोलो, नहीं पता है अपफ्रंट बोल दो, मैम सॉरी बट यू नो ओके, दे विल एक्सेप्ट दिस। बट आप झूठ बोले ना तो दे से पकड़ लेते हैं वो लोग, और वो इतना ग्रिल करेंगे ना उसके ऊपर से कि आप आंसर नहीं देते। सो बेटर लाई। अगर आपको कुछ नहीं पता है तो नहीं, सॉरी मैम, आई डोंट नो अबाउट इट बट आई विल गेट बैक टू यू श्योरली मैम, ऐसा करके यू नो ना, आंसर इट इन दिस वे, ठीक है। पैनल इंटरव्यू में भी पैनल वाले मोस्टली तो पैनल इंटरव्यूज नहीं होते, बट यू नेवर नो, मिनिमम 2 people आर देयर, फ्यू कंपनीज, गोदरेज वगैरह कंपनी, दे हैव पैनल इंटरव्यूज। सो दैट टाइम एक HR वाला पूछता है, फिर उसका आंसर आपका कंप्लीट होता है, होता ही नहीं तो दूसरा फिर चालू कर दे, then you feel scared, you know, you feel nervous, so don't do that, yeah, feel good, ठीक है। Okay, any questions about this? How to overcome nervous and get questions on us? Yes, actually you should know your अगर आपको आपका resume का by heart है ना, if you know your resume very well, you can answer the questions very well। I'll tell you over here, I take one-on-one sessions, I prepare students to 35 questions। I'll get back to you on this, just a minute, next slide। I'll tell you about the benefits of one-on-one session। So normally I take one-on-one sessions, and in one-on-one session I teach what to tell. Normally HR people ask on in any
एज और एनी ऑफ योर ना आपका टेन्योर में आपके कभी भी आपको एचआर वाला पूछता है, कौन सा भी आप जॉब चेंज करो तो भी दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ. So I give students for this. Then how to handle tricky questions. HR people ask tricky questions, like why you think we should hire you, or something like that. Tell me something about your weaknesses, strength and weaknesses. Such tricky questions normally I give you the answers. Salary negotiation is not for you, of course, because हम लोग का वो पैकेज डिसाइड ही होता है and they disclose you before only. So अगर आपको एचआर वाले को क्वेश्चन पूछना है, आप कंफर्टेबल हो, उसके बाद आपको यू कैन आस्क द टू क्वेश्चंस that is there any employee turnover in your organization. of course गोदरेज वगैरह तो कंपनीज में, या मॉर्गन स्टैनले या जेपी मॉर्गन, ये सब कंपनीज में तो एम्प्लॉय टर्नओवर इतना नहीं है. बट अगर स्टार्टअप कंपनी है, अगर स्टार्टअप कंपनी में आप ज्वाइन कर सकते, आस्क देम कि ना लाइक what is the employee turnover, and you can ask few questions like 1 or 2 questions आप पूछ सकते हो, ठीक है. Then salary negotiation I teach when you got experience or something like that, how to negotiate the salary I teach that. So then how to answer resume based question, वो मैं अपने 1-on-1 सेशन में लेती हूँ. जो आपने पूछा है ना प्रांजल, well you asked me na, so how it overcome with the nervousness. So basic आपको confident रहो. 4 people कहेंगे तो नहीं, आपको क्या हो, ज्यादा से ज्यादा कोई ऐसा सवाल पूछेंगे जो आप नहीं बता पाओगे, fine, it is okay, you will get a job, that's not a this thing, that is not a टेंशन मत लेना. जो आता है वो सही से प्रिपेयर करके जाओ, जो नहीं आता है इट्स ओके, फाइन, मेरे को नहीं आता है. नोबडी इज परफेक्ट, राइट? एवरीबडी नोज एवरीथिंग, ऐसा तो होता है. सो नो if they will bombard you, how na, you ask me when they bombard questions on us, मैं 1-on-1 सेशन में आपको इतना प्रिपेयर करती हूँ, 35 क्वेश्चंस आपसे रट के लेती हूँ, so that वो bombard करे या कुछ भी करे, एक 5 जन भी बैठे होंगे ना तो भी you will answer confidently. Okay, so that I one session में online भी लेती हूँ. So if you want you can contact me. Yes sir has my email ID, so you can contact him. And I build confidence so that you can overcome with the interview as such. कॉन्फिडेंस बिल्डिंग इतना हो जाता है मेरा क्वेश्चन आंसर्स के बाद कि आपको 100% जॉब मिलना ही मिलना है. So don't worry, if you want to contact me in person, you can certainly contact me in a person. Of course this session will be chargeable, but if you don't want, I'm not going to force you anyways. So any questions about anything? I'll tell you one thing, this thing that HR से ना कभी झूठ मत बोलना. Basic thing is this, HR people के साथ कभी झूठ बोलना है. अगर आप झूठ बोलो या आप कुछ ऐसा वो ना इतने इंटरव्यूज ले, इतने स्टबर्न हो जाते हैं ना कि उनको पता चल जाता है. So अगर नहीं आता तो नहीं आता, बस that's it. It's okay. Take your own time. अगर आपको क्वेश्चन बम्बार्ड भी किया और आपको थोड़ा टाइम लग रहा है, टेक योर ओन टाइम, इट्स नॉट बिग डील. 1 or 2 minutes अगर आप थोड़ा रुक के कर सकते हो, दैट इज ओके, फाइन, इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है. सो इवन इंक्लूड दे आर ह्यूमन बीइंग्स ओनली, बट एज आई सेड, व्हाई एचआर पीपल आर खड़ूस, वो उनको एम्प्लॉय टर्नओवर नहीं चाहिए ना. They want you to sustain at least for 2 years in their organization. So they ना ask you so many questions. कोई एचआर पीपल इतने ये होते हैं, दे जानबूझ के आपको नर्वस फील करवाते हैं. स्टिल यू शुड कीप योरसेल्फ काम, यू शुड ना अपना प्रिपेयर कर जाओ, अपना रेज्यूमे अपने को पूरा ही बाय हार्ट होना चाहिए. जो भी लिखा है आपको पता होना चाहिए रेज्यूमे में, so that nobody will ना आपको कोई हिला नहीं सकता. फिर you can answer them very nicely, very confidently. So any questions more, I'll be happy to answer. Anything related to placements,
You are most welcome, guys. Ask me questions. It will be better for you. Okay. So yes, sir. Is it okay? We can leave the meeting. Okay, ma'am. Let me just give a vote of thanks. Thank you, ma'am, for explaining it greatly. This session added a great value to our knowledge. It will definitely help students to excel in their upcoming interviews. Thank you, Yes. ma'am, for your guidance and your valuable time. Thank you to attendees for patiently attending this session and making it I swear, successful. I swear. Seminar kind of things are really boring. So it's a really great time with you guys. And I really thank again to Joshi sir and yes sir that they have given me the opportunity to talk to you. And you guys are really patient that you have heard many things from me till 1.5 hour most probably. And I think I hope that I have cleared your doubts. If you have any doubts still, I will suggest you that you can give your doubts to Yash sir. He will, now you send it to me. I will reply on that. Don't worry for that. Okay. So have a great time and best of luck, all guys. That you will get a good job. Don't worry. Thank you, Yash sir. Thank you very much. Thank you, ma'am.